I was never seen in that light कि मैं performer हो सकता हूँ या actor हो सकता हूँ. I was always considered, you know, as this funny guy, that hero ka dost, that comic relief in a film. Till Aspirants happened and people started seeing me as an actor. I think personal struggles have been bigger than professional ones. Now I think that I belong to this industry because people know me and they know me because of my craft. Hi Abhilash, thank you so much for having us here. Before we talk about the performances, you've been lauded for it, so congratulations on that. Thank you so much. But before we talk about that, I want to talk a little bit about when you got here in Mumbai, right? What, 7 years now? Yeah, almost 7 years, yeah. Okay. So when you came here, you didn't know anybody? I only had Amit Sharma's number. He had come to promote his film Tevar in 2014 or 15, I think, 14. And with Manoj Bajpayee and him being there, I just did one sketch. Him and Manoj Bajpayee, they were like, "तू radio क्यों कर रहा है? तू visual वाला बंदा है." तो it's like, ये film वाले लोग मतलब ऐसे ही बोलते हैं, कुछ होता कुछ नहीं है, तारीफ करके निकल जाएंगे. And he gave me his number. He was like, अगर कभी तू मुंबई आता है, just call me. And when I came to Mumbai, I just called him. And he's like, "अरे Thapliyal." I was like, "अरे number save किया हुआ है अमित शर्मा ने." After a couple of months, he just called me randomly. He's like, "यार अपनी ना clean shaven एक picture भेज मुझे." Photo भेजी and he was like, "You are doing my partner's film, Alia Sain's film." And that's how I got my first film. So when you came to the city, you got this offer, you were doing it. But was there any like kind of challenges that you faced when you came into the city? यार, I was working with a radio station in Delhi. So I told them कि अभी मेरे को जाना है, मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी यहाँ पर है. तो उन्होंने कहा वहाँ पे तो जगह है नहीं. तो मैंने कहा ठीक है, फिर नौकरी छोड़ देता हूँ. So after we got married on April 15th, 16 तारीख से मेरे पास नौकरी नहीं थी. I resigned. ठीक है. That much passion, huh, for the ये पैशन भी क्या, बीवी यहाँ पर है यार स्वाति, क्या बीवी इधर है पर काम? हाँ, काम मतलब हो जाएगा कुछ. So I'm saying कि वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था कि वो तो कर ही लूंगा, कुछ तो कर ही लूंगा, रेडियो तो कर ही लूंगा. And I came to Mumbai and within 6 months I had a radio, I had a slot, you know, on air. मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था फिल्म्स करने का, सच बताऊं. I wanted to do Kapil Sharma show. I wanted to perform on that show. And recently I got a chance to be on his show as a guest. My dream was to be seen on that show, to perform on that show. Yeah. After the show, he made me meet his director and he was like, यार आप मेरे शो पर आ जाओ. I was like, बताओ, जब आना था तब आपने बुलाया नहीं. It was beautiful. He's such a sweetheart. He's so funny. So during that time, did you also give any other auditions? Did you not land a lot of roles? How was that journey for you? So हमेशा लोग वही बोलते थे कि funny है, because that's how I am. Funny लड़का. तो वही है ना, लेकिन casting वाले भी वही बोलते थे कि funny है तो हीरो का दोस्त दे दो. I was never seen in that light कि मैं performer हो सकता हूँ या actor हो सकता हूँ. I was always considered, you know, as this funny guy, that hero का दोस्त, that comic relief in a film. That's how I used to see myself also, because I was doing a lot of Instagram, you know, funny videos. Muffler Man was a political satire. तो thoughtful है लड़का लेकिन funny है. उसको मैं तोड़ नहीं पाया था कभी. Till Aspirants happened and people started seeing me as an actor. In fact, a very interesting story behind Blurr. I was supposed to play the होटल मैनेजर्स कैरेक्टर. तापसी ने मेरे को बोला देख, मैंने कहा कि तू फिल्म बना रही है अपनी, एक तो है ना मेरे दोस्त बड़े मॉरली करेक्ट है, ये बड़ी प्रॉब्लम है. अब तू दोस्त है, फिल्म दे देना, एक पार्ट दे दे यार. तो शी वाज लाइक ठीक है मैं फिल्म बना रही हूँ बट देयर इज दिस पार्ट, तू उसके लिए ऑडिशन करेगा, ठीक है, अगर हुआ तो हुआ वरना बाहर में जाओ. आई ऑडिशन फॉर इट. आई शॉट इट हियर ओनली. आई वेंट टू शूट फॉर दैट पार्ट. आई शॉट, यस आई शॉट दैट पार्ट इन नैनीताल. माय मदर, तो एक बेंटाल प्रोसीजर होता है, हार्ट का एक्सटेंसिव ऑपरेशन होता है, वो होना था. मेरी माँ का वॉल्व रिप्लेस होना था. तो मुझे लगा एक दिन का शूट तो मैं निकाल लूंगा नैनीताल जाके. आई वेंट टू नैनीताल, आई शॉट, आई केम बैक. तापसी का अगले दिन कॉल आया, बोलती है कि सुन स्क्रिप्ट भेज रही हूँ पढ़. मैंने कहा मेरा तो शूट हो गया, स्क्रिप्ट क्या भेज रही है अब. बोलती नहीं, अजय सर चाहते हैं एंटागनिस्ट का पार्ट करे. 1 महीने का शूट में अफोर्ड नहीं कर सकता था. Because your mom was unwell. Yes. So I told my wife अनुभूति, I told my sisters कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है. They were like तू शूट कर, हम लोग हैंडल करेंगे. Was it ever a point you thought कि यार मुझसे नहीं होगा, बस हो गया, rejections आ रहे हैं, लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं, like you said, बहुत टाइम तक लोग kept looking at me as a comic character, right? Swati, I was loving it. Everything was a bonus for me. रेडियो तो मेरा चल ही रहा था ना. मेरा ऑब्जेक्टिव कभी फिल्म्स करना और ओटीटी पर कहानियां कहना तो था नहीं. मेरा तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट, मैं तो अगर 4 ऐड करके भी वापस दिल्ली चला जाऊंगा, मेरे दोस्त बोलेंगे यार तू बड़ा सही काम करता है. मेरी फैमिली तो तभी भी खुश रहेगी. पर इंडस्ट्री के बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा था कि आई थिंक द इंडस्ट्री इज लाइक दिस, बट व्हेन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री यू रियलाइज नो इट्स नॉट व्हाट आई थॉट इट टू बी. हाँ, मतलब मेरे को लगता है स्वाति की बहुत ही है ना ऐसे अनअप्रोचेबल और वैसा होता है कि you can't talk to people. Scary from outside.
वो लगता था कि बड़े अलग लोग होते हैं। और जब आप व्हेन यू डोंट बिलोंग, जैसे मुझे लगता है कि अगर अभी भी मैं किसी बहुत अमीर पार्टी में जाऊंगा ना, आई वुड फील कि आई डोंट बिलोंग देयर बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ देम. Now I think that I belong to this industry because people know me and they know me because of my craft and my work and not because who I am. तो वो एक मेरे को फर्क नजर आता है कि मुझे हमेशा लगता था कि ओह अब लगता है अपने जैसे ही तो है. वो सेल्फ डाउट एक्चुअली हमारे अंदर बहुत बचपन से होता है. दिल्ली में ना मैं डीडीए फ्लैट्स में रहता हूँ. डीडीए फ्लैट्स 4 तरह के होते हैं यूजुअली, एसएफएस, एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और एक और जनता फ्लैट्स. ये 5 तरह के फ्लैट्स होते हैं. मेरा घर एलआईजी में था, लोअर इनकम ग्रेड. आई कम फ्रॉम दैट स्पेस. वो बोलते हैं 1 BHK बट वो हाफ BHK होता है, 1.5 कमरा होता है. तो उस 1.5 कमरों से निकला हुआ लड़का हूँ यार मैं. तो वो सेल्फ डाउट तो हमारे अंदर बचपन से होता है. सपने देखने का स्पेस उतना होता नहीं है. पहला स्ट्रगल होता है रोटी कमाने का, एंड देन यू नो थिंक अबाउट योर ड्रीम्स एंड फॉलोइंग देम एंड यू नो डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम देयर, सो आई हैव दैट रियलिटी चेक कि ये सब कुछ अभी तो है बट चला भी जाएगा. I think वो reality check बहुत important है, that this is now, and it can be different, it can be bigger, it can be the same, it can be anything, but I think at the core the person you are ना वो रहना चाहिए बस. बाकी सब तो संभाल लेंगे यार. While on this journey from 2015 till date, what has been the most difficult time, say whether on a shoot or whether while you were trying to make it, was there ever a point where you found like, okay, this is really tough for me to do right now? Professionally, I think none, but personally, I've seen a lot of struggle since 2018 till now. I've been in and out of hospital, not because of me. For my first, my sister, she was detected with cancer, breast cancer. So that journey was a long journey. My father, he again, we came to know about his illness, and I lost him last year. My mother had like 2 major heart attacks and then an extensive surgery. I think personal struggles have been bigger than professional ones. I think professional तो you can take care of यार. मतलब 4 महीने काम नहीं मिलेगा, घर पे बैठ जाओगे, आप रेडियो कर ही रहे हो साथ में. Listen, you're also someone who does a lot. Like you always saying, आरजे तो है ही, right? एक्टर तो आप बन गए हो, इंस्टाग्राम पे तो आप कंटेंट क्रिएट करते रहते हो. हाउ डू यू बैलेंस ऑल ऑफ दिस? एंड जस्ट सम टाइम बैक यू वर टेलिंग मी टाइम तो बहुत है मेरे पास. कहाँ से है? पर है मतलब मेरे पास एक जॉब है, मुझे लगता है टाइम नहीं है किसी और चीज के लिए मेरे पास. कहाँ से है टाइम आपके पास? शायद एक तो डिसिप्लिन से बहुत कुछ आता है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट डिसिप्लिन. थैंक्स अभिलाष, इट्स ओके. नो, वो इंटेंट है कि आप ये सब कर सको तो सब कुछ हो जाएगा. व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर एस्पिरेंट्स और Blurr or Faadu, I was parallelly doing my radio gig. You have a daily show, right? Yes. Monday to Friday, I'm on air for 4 hours every day. And I cannot afford to let go of it also यार. मतलब ऐसा फिल्मों से ऐसा पैसा तो मिलता नहीं है क्या. तो और वो है ना वो लोअर मिडिल क्लास माइंडसेट की महीने के एंड में एक सर्टेन अमाउंट आना चाहिए. वो तो मैं नहीं छोड़ पाया हूँ अब तक. Now we're going to talk about Blurr. We're talking about Faadu. When you're doing roles like this, which are necessarily not considered leads, right? But I would think these roles really drive the narrative. They're extremely important today. But sometimes people feel like, like we were discussing, this guy did a great job, but maybe a bigger name could have done it better. I don't understand it. What do you have to say? First of all, we'll have to see ये बड़ा नाम होता क्या है. बड़ा काम करना तो हम लोगों को पता होता है कि कैसे करना होता है. बड़ा नाम अगर आप बोल रहे हो कि बड़ा नाम मतलब he has to be an industry kid, एक बड़ा सरनेम होना चाहिए, वो तो अपने पास है नहीं. सिर्फ एक बड़ी चीज होती है हमारे सपने. उनसे बड़ा हमारे पास कुछ नहीं होता है. उसको चेज करने के लिए हमें महीनों लग जाते हैं पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स का नंबर निकालने में. किस्मत हुई तो हम ऑडिशन देते हैं, और फिर किस्मत और अच्छी हुई तो डायरेक्टर के पास ऑडिशन पहुंचता है. तो जो सैकड़ों ऑडिशन हैं उसमें से एक आप शॉर्टलिस्ट होते हो और आपको काम मिलता है. जब वो काम मिलता है ना स्वाति, यू वांट टू गिव योर 200% टू इट बिकॉज यू आप इस शहर में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. तो ये हम छोटे नाम वाले जो लोग हैं, हमारा ये स्ट्रगल होता है. You played an antagonist in Blurr, an alcoholic brother in Faadu. I don't think both these characters are anywhere close to you, okay? So when you are prepping for characters that are so opposing from what you are as a person, do you find it challenging? What is your method, or is there like a process you follow when you're portraying something that's so opposite from what you are? Somewhere I think they are an extension of your imagination or who you are. You'll always put something of you in those characters for sure. I in fact tried Sharab before, 2 or 3 days before I were to play Roxy. I was going to tell you, I know that you don't drink. How did you do it? I thought कि यार एक बार try करते हैं. तो अनुभूति's brother, he was here.
गोपाल एंड उसकी टकीला शॉट्स पड़े हुए थे, तो हमारे घर में बार तो है, फिर मैंने क्या कहा, मैंने अनुभूति को बोला मैं वहाँ पर हूँ और मैं टकीला शॉट्स ले रहा हूँ, प्लीज़ अंदर मत आना, ठीक है। मैंने 3 शॉट्स दिए, स्वाति मुझे कुछ याद नहीं, मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, मुझे कुछ याद नहीं मेरे क्या कॉन्वर्सेशन था। अनुभूति ने अगले दिन बोला तू हर 5 मिनट खुद बाहर आके बोला था क्या मैं ड्रंक लग रहा हूँ मैं लग रहा हूँ मैंने शराब पी हुई है। सो माई मेथड एक्टिंग फेल्ड क्लियरली, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल, पर I've seen my father drunk at times. So एक सीन है बड़ा प्यारा फाड़ू में जहाँ पर कि सैमी का कैरेक्टर, मंजरी का कैरेक्टर मेरे जूते उतार रहा है, मैं बोल रहा माँ पैर को हाथ मत लगाया कर। I was thinking about my father क्योंकि when you know at times he would just get drunk करते थे, और जैसे ही उनके जूते कभी उतारो तो मेरी माँ का नाम वो लेते हैं, मंजू थे, वो बोलते थे कि मंजू, अरे मंजू जूतों को हाथ मत लगाना। For other people who are setting out to, you know, make their own paths, create their own journey like you have, what is something that you'd want to tell them, the ones who are not in the city, they don't have a backing, maybe they don't even have that one number that you did? लाइफ में जो कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो कर लो। We think a lot, we plan a lot, we execute very little. एक ना हम स्केच बनाएंगे जिसमें ऐसा 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 हो जाएगा, फिर ये कैरेक्टर बड़ा हो जाएगा, फिर हम ये करेंगे। अबे पहले बना तो उसको, एक बार शूट तो कर, देख तो वो है कैसा। Do it, become a doer. थिंकर्स बहुत सारे हैं, विचारने वाले और ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी देखोगे, योर लाइफ 4 things you should do, 3 things you shouldn't do. अबे हटाओ उनको। You know, my takeaways from this therapy session is intent, no fear, and just do. Yeah. Thank you so much, Abhilash. This is such a great conversation. Thank you.